muscles in the body which are different. And these muscles are attached to skin. The muscles of facial expression. This concept where muscles are attached to skin is there in animals, cows, horses. आप में से कितने लोगों ने काऊ देखा है? काऊ, हाँ, क्या बात है? अरे बाबा, आपको लग रहा है न्यूयॉर्क में उन्होंने सर्वे किया था कि मिल्क कम्स फ्रॉम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डेयरी. 99% स्टूडेंट सेड डेयरी, 1 स्टूडेंट सेड काऊ. ओके, तो काऊ के पीठ पे जब मक्खी बैठती है तो आपने देखा कि पूरा स्किन हिला. ओके, क्यों? बिकॉज द मसल इज देयर बिलो द स्किन. द नेम ऑफ दैट मसल इज पैनिकुलस कार्नोसिस. पैनिकुलस कार्नोसिस. In lower animals, that is there throughout. You see a horse in the stable, उसका स्किन भी वो हिलता है, मक्खी बैठा है. We have that component where muscle is attached to skin only in the face and up to the neck. Why? Because we have free hands. आपने इधर मक्खी बैठा तो मीरा रोड वाले किधर गए? मच्छर से परेशान, हाथ ऊपर करो. मीरा रोड, अच्छा, ओके. मीरा रोड में आप बाइक भी चलाते हो ना, तो बाइक के साथ आता है वो, उतना उसका स्पीड है. Okay, so we have been given hands and therefore paniculus carnosus is only here where we can move the whole skin. बाकी किधर skin नहीं move कर सकते. Okay, thank you. तुम्ही लिहाल नंतर paniculus carnosus issue. Now these muscles of the face, they are arranged in 4 groups or rather 5 groups. Muscles of face. इनका origin, insertion, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है. इसका किसी का भी origin, insertion आपको याद नहीं रखना है. इनके actions आपको याद नहीं रखने, सबके नहीं, थोड़े थोड़े muscles के. And I'll tell you about that. 1. Muscles around the ear. Muscles around the ear are 2 intrinsic muscles and extrinsic muscles. Intrinsic muscles, they change the shape of the ear. कुत्ता सोया रहता है, बराबर है. अब आप वो कंपाउंड में धीरे से घुसते हो, तू ते काय कर, हे ठेवून द्यायचं आहे. अभी मैं सीख रहा हूँ आत्मनिर्भर. असू दे, मैं माझ्याकडे बघूनच. इसको बोलते हैं क्या हो गया, कृषांत तीसरे बेंच पे चला गया तो क्या हो गया. So the muscles of the ears are intrinsic and extrinsic. Intrinsic change the shape of the ear. So when the dog is sleeping like this and you slowly step into the compound, immediately you see his ears becoming big. Okay? Then he sees, oh, he's insider. Then when he realizes, oh, he's outsider. So this is how they shape. Intrinsic muscles, their origin and insertion. By intrinsic means origin and insertion is inside the ear. Any intrinsic muscle of larynx, intrinsic muscle means origin and insertion is within that organ. Extrinsic muscle means one end is attached outside, other end is attached to the organ. That is extrinsic. So one end of the muscle will be somewhere else and another will be on the ear. Extrinsic muscles of the ear, they move the ear as a whole. कहाँ पे दिखता है आपको? Elephant.
elephant. So they move the whole ear. Okay. Some of you here may be able to move the ear. क्या बात है, क्या बात है. ये क्या, कौन सा मसल से ये? एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक. He can move the whole ear. Anybody else? हाथ ऊपर करो. हाँ, चला बलचेट वार. ओके, ठीक है. ती खूपच हसते. थांब थांब थांब. Anybody who can move the whole ear as a whole? कौन है? क्या बात है? So all these are still evolving. They are still, अपन पीछे है वो evolution. We are evolved. अगर आपको ऐसा लगता है ना, कोई ये अगर कल आपको बोलता है I can move my ears, you cannot, बोलेगा we have passed that stage. Okay, in our previous lives we used to move. Next life you will not be able to move. Okay, you are evolving. Okay, so we are fully evolved. Who are non-evolved creatures? चलो हाथ ऊपर करो. Okay, thank you. आज सुबह अरे परेल का एक डॉक्टर जयेश वीरा करके and morning he sent me a message कि sir I woke up today and opened Facebook just to realize that how I woke up. मैंने कल सीखा था आपको how do we wake up. The ascending reticular activating system activates the non-specific thalamic nuclei. And non-specific thalamic nuclei भूल गए आप लोग. उधर मेरा 20 साल पुराना स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं. They project all over the cerebrum and that's how we wake. Okay, moving ahead. So this is around the ear. Then muscles around the nose. Muscles around the nose. Muscles around the eye. Muscles around the oral opening. Okay? And muscles of the neck. Okay. ये मसल्स अराउंड द नोज. ये तीनों में नोज, आई एंड ओरल ओपनिंग. व्हाई आई हैव टेकन देम सेपरेटली? इन ऑल ऑफ देम देयर आर टू कैटेगरीज. There are two categories. One which closes, one which opens. One will close, one will open. One will close, one will open. Not one, there are many. There is a muscle which closes the nose and that muscle is called as compressor naris. Compressor naris. हम लोग कभी कभी ऐसे करते हैं ना. So we can close our nostrils. Compressor naris. ओके. हाँ, नहीं जम रहे तुमको सोलो. एक्स्ट्रा हाइपर इवॉल्व है तो compressor naris. One which opens the nostril, उसका नाम रहेगा dilator naris. Dilator naris. Depressor septi. Depressor septi. देखो ये septi है ना, ये ऐसा डिप्रेस होता है कुछ लोगों में, और नोज ऐसे ऐसे डायलेटर. दिस हैपन, दिस मसल्स आर वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स. और जब गुस्सा आता है ना, आपने देखा है कुछ कुछ लोगों का गुस्से में एकदम डायलेटर नेरिस. नेक्स्ट टाइम किसी को गुस्सा आता है तो यू शुड बी अरे कौन सा मसल? डायलेटर नेरिस. एंड डिप्रेसर सेप्टा. ऐसा उनका नाक है. और जो सर्दी से परेशान लोग होते हैं उनमें कौन सा मसल वेल डेवलप्ड होता है? कॉम्प्रेसर नेरिस. वो बार बार उनका 24 घंटा यही चल रहा है, तो उनको फोन भी कर दो. हाँ बोल. हाँ हाँ हाँ. कॉम्प्रेसर नेरिस. आई. So there is one which closes it, one which opens it. One which opens it is levator palpebri superioris. Levator palpebri superioris. देखो levator ओपन करता है, palpebri superioris elevates the upper eyelid. Levator palpebri superioris.
ओके, क्लोज आई पे क्लोज करने वाला मसल है ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है ऑर्बिटल पार्ट, दूसरा है पाल्पेब्रल पार्ट, तीसरा है लैक्रिमल पार्ट। ऑर्बिटल, लैक्रिमल, पाल्पेब्रल। क्या फर्क है? ऑर्बिटल पार्ट इज फॉर क्लोजिंग द आईज टाइट। जब आपकी माँ बचपन में आपको कंजंक्टिवाइटिस होने के बाद आपको आई ड्रॉप्स डालने का प्रयास करती थी और तभी आपने जो किया, दैट इज क्लोजिंग द आई टाइट। ओके, ऑर्बिटल पार्ट। पाल्पेब्रल पार्ट, दिस इज फॉर जेंटली क्लोजिंग द आईज, जो आप लेक्चर में करते हैं मेरे। पाल्पेब्रल पार्ट, पाल्पेब्रल पार्ट क्या होता है ना, इट स्प्रेड्स द लैक्रिमल फ्लूइड, इट स्प्रेड्स द लैक्रिमल फ्लूइड ऑल ओवर द eyeball. Okay, so we keep on closing, so every time we close the lacrimal fluid is spread. Okay, then last is lacrimal part. Lacrimal part is here at the corner, there is lacrimal gland here. So when it contracts, it kind of squeezes the lacrimal gland and releases the lacrimal fluid. Lacrimal part. Okay. Okay. Now coming to the oral cavity, one which closes it is orbicularis oris. Orbicularis oris. Orbicularis oris. One which opens it, असंख्य muscles है, बहुत सारे muscles है, one which open it. तो इनके नाम आपको याद रखने नहीं है सबके। आई एम जस्ट पुटिंग द मेजर वंस। ज़ाइगोमैटिकस मेजर, ये ऐसे यहाँ से आता है, इट हेल्प्स अस टू स्माइल। ये जो स्माइल का है ना, ज़ाइगोमैटिकस मेजर, माइनर। ऑर्बिक्युलरिस ओरिस, इट क्लोजेस द माउथ। ओके, zygomaticus major, then there is levator labii superioris, levator leva, ये जो एक्शन levator labii superioris, then there is depressor, ये अल्टीमेटली ओपन ही करता है, depressor labii inferioris। ओके, इनके एक्शन में ही इनका नाम में ही इनकी एक्शन छुपी हुई है। See one more muscle, levator anguli oris. Angle of mouth is been elevated. क्या स्माइल देती है? अच्छा, एक्शन बता रही थी। ओके, देन डिप्रेसर anguli oris. आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला, उसके बाद जो आपका रिएक्शन रहेगा क्या है? डिप्रेसर anguli oris. Okay, so levator anguli oris, depressor anguli oris. यहाँ पे एक मसल है जो ये दोनों कैटेगरीज में नहीं आता, और उसका नाम है बक्सीनेटर। बक्सीनेटर, buccinator. Okay, this buccinator muscle helps in
hold, push in whistling. So प्रेशर मारता है वो cheeks पे हवा. Okay, I'll talk about all these muscles again. And muscle of the neck is platysma. Platysma is this muscle. When you do this, platysma. Okay, so लिहून झालं. परत बोलणार आहे मी सगळं 3 मिनिटं. हां. So now we are talking about the muscles of the face. Muscles of the face are divided into 5 groups. Muscles around the ear, around the nose, around the eye, around the oral opening, and on the neck. Muscles of the ear are intrinsic muscles which change the shape of the ear, like the dog which does like this. Or extrinsic, they move the whole ear together, like in case of elephant. Nose muscles which close the nasal opening is compressor nares. Those people with sardi, well developed. Open, which open the nostril, dilator nares. जब आपकी माँ को गुस्सा आता है कभी, well developed in both the genders. Okay. जिसको भी गुस्सा आता है उसमें well developed है. हाँ. Eye has muscle which closes its orbicularis oculi, which has 3 components. Tightly closing the eye. During watching in your childhood those scary movies, right? Then अभी आप adult बन गए, so you gently close the eye when you don't want to see. थोड़ा आप scare लगे, but अभी बच्चे नहीं रहे ना, so you do like this. जब रात को वो खिड़की पे कुछ तो दिखेगा इसके लिए. And then lacrimal part, which actually squeezes the lacrimal gland and pushes the fluid. Palpebral part distributes that lacrimal fluid properly, gently closing eyes, tightly closing eyes. Oral opening, one which closes orbicularis oris. One which opens are multiple, levator labii superioris, levator labii inferiores. But your generation, what it is doing, it is using both the muscles together when you take that photograph. So orbicular, ये भगवान ने भी सोचा नहीं रहेगा. Orbicularis oris along with levator labii superioris and inferior. ये जो आप करते हैं ना पाउटिंग. Then levator anguli oris. और आज रिजल्ट देखने के बाद depressor anguli oris. There are some muscles on the forehead also. One more category I am adding here. Rhizorius, then frontalis. Yesterday we studied. Surprise! Oh, some of you are today after seeing the result. Oh, surprise. Then, so these are the muscles which open. Zygomaticus major, minor for smiling. So some of you after seeing the result today will be like this. Okay. Muscle of the neck, platysma. Last war between the hero and villain, उसमें एक ही चाकू रहता है, तभी आपको प्लेटिस्मा दिखता है. मुझे तो प्लेटिस्मा दिखता है. मुझे आई एम नॉट कंसर्न इसका कटेगा उसका कटेगा सर गला. आई एम लुकिंग एट द प्लेटिस्मा. व्हाट अ व्यू प्लेटिस्मा. ओके, सो दिस एनाटॉमी में आने के बाद ऐसा ही होता है. मसल्स ऑफ द ईयर. मेरा शादी होने के बाद मेरे वाइफ ने मेरे को बोला, देखो इधर मैंने क्या पहना है, तो मैंने बोला दिस इज अ क्रम्पल्ड प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. एक्चुअली बस बाबा तू रिकॉर्ड केलं का? सो फर्स्ट लाइन इन बीडी चौरस से ऐसा था. ईयर का फर्स्ट इंट्रो अभी चेंज हो गया है उन्होंने, शायद मेरे फीडबैक. अभी मैं एडिटर था लास्ट इसमें, तो इसके इट इज़ अ क्रम्पल्ड प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. और मेरी वाइफ मेरे को ऐसा दिखा है, ये दिखा इधर ये. और कृष्ण तो सेवा करता है. eat everything. बॉडी नहीं निकली. हाँ सर्वेंट मामा लोग
Mama daw sa guys, mama yun.